मैंने किया, फोन उठाया नहीं उन्होंने। नहीं, मैं मेरे यहाँ पे बराबर मुझे चल नहीं रहा वापस।
Can we start, ma'am? अरे 11:30 बजे बेटा, नहीं अभी रुको, ये प्रोग्राम तुम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे? Welcome, madam. Very good morning, Naidu madam. Good morning. Yes, shall we start? Yes, ma'am. A warm welcome on International Day for Tolerance to Dr. Rajeshwari Rana of Women's Studies and Research Center, Rani Durgavati Vishwavidyalaya University in Jabalpur, MP. A warm welcome to Dr. Jitendra Ahirkar, Principal of B.L. Amlani College of Commerce and Economics, M.R. Nathwani College of Arts, Ville Parle, Mumbai. A heartiest welcome to our dear Principal Madam, Dr. Shraddha Anil Kumar of Arya Vidya Sabha, of Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya, run by Arya Vidya Sabha, Jaripatka, Nagpur. I would like to say a word for these great principals who are always motivating, enthusiastic, and always taking a step ahead to bring awareness in the community. This is a very new term that we are hearing of, Tolerance Day, that is International Tolerance Day. It's really a great deed for such philanthropists to work for the society. Now, I would request Dr. Shraddha Anil Kumar, Madam, our principal, to address the virtual participants. Good morning to everyone. On behalf of Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, B.L. Amlani College of Commerce and Economics, Ville Parle, Mumbai, and Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya, Jaripatka, Nagpur, welcome you all on today, International Day of Tolerance. We always conducting the programs in a collaboration these days, which is very important for everyone. Actually, the aim of this program is to introduce the students about why these days are celebrated. Actually, today is the Tolerance Day. In the world, everyone is celebrating this day on the 16th November. Tolerance is the respect, acceptance, and appreciation of the rich diversity of our world, culture, forms of the expression, and ways of being human. This is the main theme of this day, which we are celebrating this day. And our today's resource person will explain about it in detail about this day. Actually, टॉलरेंस इट इज, ये इंसान का सबसे बड़ा गुण है. हर इंसान के अंदर बहुत छोटे जो है पेश में आ जाते हैं. तो हमको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर आगे जिंदगी में किस तरह से बढ़ना, यही इसमें हमको सिखाया जाएगा कि किस तरह से कोई भी बात को हम सहन करने के बाद, सहन करना मतलब ऐसे नहीं कि भाई आप कोई भी बात सहन करेंगे, परंतु कोई भी बात का जवाब देना है तो हमको किस तरह से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करके अपनी जो बात है वो सबके सामने रखनी है,
ये इस देश के ऊपर आपको समझाया जाएगा। तो मैं ये चाहूंगी कि ये हमारे की जो रिसोर्स पर्सन है वो आपको इसके बारे में बोलेंगे। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ पर आकर हमारे कॉलेज में जो अपना समय दिया है ऑनलाइन प्रोग्राम में, मैं उनको भी थैंक्स कहती हूँ। और सभी का यहाँ पर आए हुए सभी स्टूडेंट्स, मेरा दूसरे BL अमलानी कॉलेज का स्टाफ, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। और आगे मैडम मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ, पाठक मैडम। थैंक यू सो मच। Thank you, madam. Now I request Divya Parekar, HOD of Sociology, to introduce our eminent guest. Thank you, ma'am. Good morning. Proud privilege to introduce an eminent scholar and academician. Dr. Suchita Marathe is a professor in English, vice principal at Srimati Binjani Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. She has completed her master's in English literature in 1997 and stood second in order of merit from RTM Nagpur, University Nagpur. Her interview with the leading novelist in English literature, Anita Nair, has been published in an online journal, Langlit. She has a rich teaching experience of 23 years. She has published around 30 research articles in souvenirs, journals, and edited books. She has co-edited a textbook, A Knowledge Tree, which had been prescribed for BA semester first and semester second of RTM Nagpur University. A creative writer, she has a number of write-ups, poems, short stories published in newspapers and blogs. She has delivered a host of lectures as a resource person in student-centric activities organized by institutions. Dr. Suchita Marathi believes that learning should not be restricted to four walls, but should be a continuous process. Thank you. Over to you, Marathi madam. Over to you, Marathi madam. Okay, thank you. I hope my voice is audible to everyone. Is my voice audible to everyone? Yes, madam. मेरा आवाज आ रहा है सबको? Suchita, you are audible. Yes. Now what I want to say that ask all your girls to mute their own mics and all the other members to mute their mics, because there is a lot of breaking of voice. I will ask all the other members who have joined, esteemed members from the staff and the students, to please mute their mics so that we can have a very comfortable program and you can all hear me comfortably. Thank you so much, madam. A very good morning to everyone. And let me first wish you all a very good, happy International Tolerance Day. Director Dr. Rajeshwari Rana, Women's Studies and Research Center, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, University in Jabalpur. Principal Dr. Jitendra Aherkar of BL Amlani College of Commerce and Economics, MR Nathwani College of Arts, Vile Parle. Principal Dr. Shraddha Anil Kumar of Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya. Coordinator of this program, Dr. Chetna Pathak. All the staff members of the three institutions and all the dear students of the three institutions. Again, a very happy International Tolerance Day to you all. At the very outset, let me thank the organizers for inviting me over and delivering a lecture on this very, very relevant topic. And because this has given me an opportunity to think and ruminate over on such a relevant topic. And I think the target audience are the students, as Shraddha Madam, Dr. Shraddha Madam also said that the objective of this program is to cultivate this idea, to sensitize the students towards tolerance, because tolerance, सहन करना, ये बहुत बहुत बेसिक क्वालिटी है. और ये इसके लिए संस्कार जो छोटे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो संस्कार क्षम
वो एज ग्रुप में है. So this is, I would like to again congratulate all the organizers for taking up this program and trying to sensitize these students on a very, very relevant topic. I would like to share my screen. I will start sharing my screen. The host will have to allow me to share screen. Here the host says that the like host has disabled the participants screen sharing. Hello. Ahirkar sir. जितेंद्र सर, हेलो. हाँ. सर प्लीज होस्ट को, मैडम को होस्ट कीजिए. हेलो सूर्या सर, मैडम मैं कॉल करती हूँ थोड़ा सा. हाँ हाँ चलेगा. Shraddha ma'am, any issue? Actually, I'm not able to share my screen. It says that the host has disabled participant screen sharing. Yeah, we are doing that only. Yeah. Okay, no problem. Suchita madam, sorry for the inconvenience. No, not at all. These are all things which are part and parcel of this online programs. Yeah, it's done. Okay, thank you, sir. I hope my screen is visible now. Yes. So let us begin. Very warm welcome again to all of you. And again, let me start with sharing my screen. And as today is 16th of November, and as everyone knows by now, because of the introductory remarks and everything, that today we are celebrating International Day for Tolerance. And I'm Dr. Suchita Marathe, Vice Principal and Professor in English at Srimati Banzani Mahila Mahavidyalaya, who would like to have some interaction with you on this day. Now, what we are trying to do is trying to build global tolerance. हम क्या करना चाहते हैं कि ये global यानी हमारी जो पूरी पृथ्वी है, हम जिस पर रहते हैं, हमारा जो घर है, वो हम शांति से यहाँ रह पाए. इसीलिए हमको में याद दिलाना पड़ता है कि हम लोग सभी यहीं के एक के रहवासी. हमारा एड्रेस भले ही कुछ हो, नागपुर का हो, फिर बाद में महाराष्ट्र का हो, इंडिया का हो, और फिर वर्ल्ड, पर लास्ट में जाकर हम कहाँ रुकते हैं कि वी आर ऑल लिविंग इन दिस वर्ल्ड. And if we are not having this attitude of tolerance, we won't be able to live in peace. And we have got a lifetime of, I think, 70 years because of science nowadays, more like at the most 80 years. हमारी lifetime कितनी है? 80 साल. उसमें हम अगर शांति से नहीं रह सकते हैं, हम अगर एक दूसरे से
प्यार से नहीं रह सकते हैं, हम एक दूसरे को टॉलरेट करके नहीं रह सकते हैं, so then we will be wasting a lot of time in fighting, in being angry. So therefore this day is very, very important, from the microcosm level of an individual to the macrocosmic level of international relations with two countries. So ये हमारा path है. We will be seeing what is International Tolerance Day. Then an award has been constituted by UNESCO on in relation to Tolerance Day. Then we will find out what is tolerance, and we will journey from the microcosm to the macrocosm, and let us find out which are the 4 tips for keeping ourselves tolerant. हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और फिर कुछ कोट्स हम देखेंगे जो अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज ने बोले हैं ये टॉलरेंस के बारे में. सो जैसे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली ने 1996 में ये रेजोल्यूशन पास किया कि 16 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाएंगे. क्यों, जैसे अभी मैडम ने, श्रद्धा मैडम ने, आपके प्रिंसिपल ने आपको बताया कि ये प्रोग्राम आप क्यों ले रहे हैं, वैसे ही कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो जब ये डिसीजन लिया गया कि ये डे, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाएगा, तो सच में कुछ ना कुछ भूमिका रही होगी, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे. तो ये है वो. नेचुरली इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं. सो नेचुरली दिस नीड ऑफ ऑब्जर्विंग दिस डे इज वेरी वेरी रेलेवेंट, इज वेरी वेरी नीडेड. सो क्यों, क्योंकि टॉलरेंस जो है वो इंडल्जेंस भी नहीं है, इंडिफरेंस भी नहीं है. हम बहुत एक दूसरे के लाइफ में नोकझोंक नहीं करेंगे, हम इंडिफरेंट भी नहीं रहेंगे. वी विल रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट रिच वैरायटी ऑफ अ वर्ल्ड्स कल्चर. Our world culture is made up of different cultures, languages, religions. So we have to adopt an attitude of respecting. Mutual respect होना चाहिए एक दूसरे के लैंग्वेज के लिए, कल्चर के लिए, ड्रेस के लिए. It might be about color, it might be about appearance, so many different things we come across. So हमारा रवैया, हमारा attitude होना चाहिए कि if I am proud of my own culture, I should allow others to be proud of their own cultures also. I should not encroach or I should not look down upon. हम एक दूसरे को के कल्चर के, ड्रेस का, किसी भी तरह का हम मजाक नहीं उड़ाएंगे. हम आर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, हम कैसे एक्सप्रेस होते हैं, जैसे लैंग्वेज है हमारी, उस माध्यम से हम एक्सप्रेस होते हैं, तो उसके बारे में भी हम टॉलरेंट एटीट्यूड रखेंगे. We would like to respect all forms of expression and ways of being human. Being human is very, very important, like looking after the pains of other people, like being tolerant towards the existence of other people. ये बहुत बहुत जरूरी है. Tolerance recognizes the universal human rights and fundamental freedoms of others. हम देखते हैं कि हम हमारे खुद के राइट्स के बारे में हमेशा बहुत सजग रहते हैं, लेकिन हम जब हमारे राइट्स लेते हैं, तब हम किसी दूसरे के राइट्स पर एनक्रोच तो नहीं कर रहे, किसी दूसरे के राइट्स को हर्ट तो नहीं कर रहे. ये देखना बहुत जरूरी है. सो वी शुड बी sensitized, we should be aware enough that when we recognize our rights, we should recognize the rights of others also. और हम ये recognize कर रहे हैं कि people are naturally diverse. हम एक दूसरे से अलग है, हम लोग अलग अलग है. हम कंट्रीज के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है. एक दो भाई बहन भी अलग अलग हो सकते हैं, जिनके माता पिता भी समान है, लेकिन वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, उनके एम्बिशंस अलग अलग हो सकते हैं, उनके एटीट्यूड, उनका नेचर अलग अलग हो सकते हैं. तो जब हम मान लेते हैं कि दो लोग जो है, दो इंडिविजुअल्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, और अगर मैं इस तरह से हूं तो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी तरह से है, तो उसको टॉलरेट करना, उसको सहन करना, कुछ अच्छी आदतें उसमें होंगी, कुछ बुरी आदतें उसमें होंगी, तो वो सहन करना जरूरी है. सो इन द एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कैन ensure the survival of mixed communities in every region of the globe. So what they thought while instituting this day, उनके मन में ये था कि अगर ये सब हम इम्बाइब करते हैं लोगों में, इन
उनके स्वभाव में, उनके रवैये में, उनके एटीट्यूड में, so then we will have a high quotient, we will increase the level of tolerance and then there will be global peace. और एक योगा योग तब हुआ कि महात्मा गांधी की भी 125th एनिवर्सरी थी जब यूनेस्को ने एक और अवार्ड स्थापित किया, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस. The prize is of $1 lakh. It is awarded every 2 years for exceptional contributions and leadership in the field of tolerance promotion. तो कोई भी हम अच्छी चीज इनकलकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मोटिवेशन होना चाहिए. तो मुझे लगता है यही ऑब्जेक्टिव होगा कि एक अवार्ड रखना मोटिवेट, ताकि ये इंडिविजुअल प्राइज भी है, सोसाइटी को भी जाता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी जाता है. द विनर मे बी आइदर एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. तो कोई भी राइटर हो, एजुकेटर हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन, पायोनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, लीडर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कोई भी ये अवार्ड हासिल कर सकते हैं. आप नॉमिनेशंस भर सकते हैं और आपने अगर बहुत अच्छा काम किया है इन रिलेशन टू टॉलरेंस, then you can win this prize. The prize may also be awarded to the families of outstanding individuals who have lost their lives in the struggle against intolerance. So even the families, posthumous award भी मिल सकता है. अगर कोई बलिदान दे देता है इस कार्य में तो उसके फैमिली को भी ये अवार्ड जा सकता है. The prize was made possible by the generous donation of the Indian artist, writer and diplomat Madanjeet Singh, who is also Goodwill Ambassador of UNESCO. Mr. Singh was a follower of Mahatma Gandhi and served 9 months in Mirzapur jail during the Quit India movement against British rule. He received the Indian government's Tamrapatra Freedom Fighter Award in 1972. So Madanjeet Singh, he was generous and he gives away this prize of $1 lakh every 2 years to a person or to an organization who has worked for tolerance. In addition to a distinguished career in diplomacy and the arts, he has authored numerous books on topics ranging from Himalayan art to solar energy. So you find that he was such a dynamic personality, from Himalayan art to solar energy, and plus doing so much monumental work in tolerance. Madanjeet Singh was born on 16th April 1924 in Lahore, present-day Pakistan. He is an internationally known author of several books closely interwoven with UNESCO's programs, principles, and ideals. So he has worked closely with UNESCO. He served as ambassador of India in Asia, South Africa, and Europe. In 1995, in recognition of his lifelong devotion to the cause of communal harmony and peace, the UNESCO Executive Board unanimously created the biennial UNESCO Madanjeet Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence. This decision was adopted at meetings in Paris to commemorate the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi. You have seen this, that this award is called as UNESCO Madanjeet Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence. In the year 2000, Madanjeet Singh created the South Asia Pacific Foundation to promote sustainable cultural, educational, and economic development throughout the region. In recognition of his generosity and untiring efforts to promote these noble objectives, which are also those of UNESCO, Madanjeet Singh was designated as a UNESCO Goodwill Ambassador on 16th November 2000. This honor was conferred on him. He was given UNESCO Goodwill Ambassador. Mr. Singh's personal commitment to fostering culture, dialogue, mutual understanding, and peace has served as a great source of inspiration to people of many different nations, cultures, and religions. Why am I telling you this? Because in any field, the motivators are important. Person who have achieved are important. And Mr. is one great work in this field, and therefore even UNESCO has honored him. Now let us begin that what is tolerance? It is a consequence of humanity. We are all formed of frailty and error. Let us all admit that we are not perfect. Like if we are perfect, we would be God. So we are not 100% perfect, even though we find individuals. हम लोग को रोज ऐसे लोग मिलते हैं कि जो सोचते हैं कि वो perfect है, तो उनको हमको tolerate करना पड़ता है. Yes, isn't it? तो ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे जो सोचते हैं कि वो 100% परफेक्ट है, लेकिन हमको अगर सही मायने में टॉलरेंट बनना है
तो पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग गॉड नहीं है, ह्यूमंस है। तो हम कुछ खामियां है, कुछ imperfections है. See, we are all formed of frailty and error. Let us pardon reciprocally each other's folly. तो पहला जो तत्व है टॉलरेंस का कि ये आप माने कि आप 100% परफेक्ट नहीं है. सो कुछ अगर प्रॉब्लम्स आप में है तो वो एक्सेप्ट कीजिए. तो ये सोचिए कि आप में जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरों को टॉलरेट करने पड़ते हैं और दूसरों को जो प्रॉब्लम्स है वो आपको टॉलरेट करने हैं. सो टू बिगिन विथ, very basic thing is that you have to accept that you are human and you are bound to have some follies, and that is the law of nature. And this is not said by me, it is said by Voltaire, and he said that first you have to accept that you are human and then all things will be easy. Now, first, how should we develop this tolerance? First, start with ourselves, individual tolerance. खुद को सहन करना सीखो पहले. तो कैसे सहन करना? You have to accept all the imperfections, as I said, you have. And first, you have to work on yourself. First, you have to control, like Shraddha Madam said, your anger. You have to develop patience. And this is very important. So first, you have to start with individual tolerance. Tolerate what life offers you. Smile. Next, your life may not be what you want to be. हम सोचते कुछ है, होता कुछ है. रोज हमारा life, it is full of surprises. हम खासा चल रहे थे, 2 साल में हम और कहाँ चले जाते, लेकिन बीच में कोरोना आ गया. All our plans went topsy-turvy. We were put in cages like the animals for so many months, but we tolerated. We not only tolerated, but what we did, we learned so many things and we came out like shining gold. Yes, all those 2 years of corona did not hamper us, did not stop us. It all the more increased our energy to fight. So that is tolerance. We tolerated the onslaught of corona, we fought with it, and we emerged victorious. We developed a vaccine and we emerged victorious. So don't complain. In the beginning, of course, जो होता है reaction होता है. जब कोरोना आया तो हम लोग 15-20 दिन complain कर रहे थे because our normal life was stopped. So naturally, complaint is going to be there, but that stretch, it should not be stretched. Complaint का एक सीमित समय होना चाहिए. कोई भी आकस्मिक कोई चीज होती है तो naturally we are going to complain, we are going to be surprised. But a person who is matured, a person who has learned, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, अभी आप धीरे धीरे समझ रहे हो, रोज आप घर से निकलते हो, यहाँ आते हो तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ते हैं, लेकिन हर बार वो प्रॉब्लम अगर आप पहले से उसको टैकल कर चुके हैं तो then you don't complain, you accept that problem and you know how to solve it. So don't complain, don't curse your luck. So you will become more tolerant अगर आप नसीब पे कुछ नहीं डालते. You take the ownership of whatever you are doing. Don't curse your luck. हमारे नसीबे पे मत छोड़ो. Don't be angry when you plan good things but plans are disrupted. Don't be angry. Yes, it will happen, as I said, that you plan few things but they don't happen as you say, as you plan, but you have to accept that. And then you have to understand that tolerance is strength, not cowardice. अगर आप tolerant है, किसी को आप सहन कर रहे हो, किसी से आप retaliate नहीं कर रहे हो, किसी से आप वो झगड़ना चाहता है लेकिन झगड़ नहीं रहे, मतलब है आप झगड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है. यस, आपको झगड़ना नहीं आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप टॉलरेंट है. आप अगर झगड़ते हैं तो naturally you will disturb your health, you will disturb the health of other people, and the result is nothing but क्या, health problems. And first again you have to understand कि हम लोग अकेले नहीं रह सकते. कोरोना में हमने देखा कि हम लोग भले ही हमारे फैमिली के साथ थे, लेकिन हमारी फैमिली भी इनफ नहीं है हमारे लिए. हमको सोसाइटी की जरूरत है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहां काम करने वाले लोगों की भी हमको आदत हो जाती है, तो हम सबसे मिलना चाहते हैं, रोज उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहते हैं. लेकिन अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो टॉलरेंट बनना बहुत जरूरी है. मैन कैन नॉट सर्वाइव अलोन, ही नीड्स कंपनी, सो ही नीड्स टू डेवलप टॉलरेंस. अगर आपको कंपनी चाहिए, आप देखते हैं समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि
धीरे धीरे उनको कंपनी छोड़ देते हैं. यस, पीपल उनको छोड़ देते हैं बिकॉज they are so much intolerant, so much irritating. So it is up to you that you have to be very, very affable. You have to be very, very comfortable to talk to. You shouldn't be irritating. And then what will happen is that you will be always surrounded by people. You will be appreciated by people. So you have to develop a high amount of tolerance. सहन शक्ति आपको करना है. आपको समाज में रहना है, सबके साथ रहना है, तो नेचुरली आपकी सहन शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी. तो जैसे हम सोचते हैं कि हम लोग कंपनी में रहना चाहते हैं, वैसे ही हमको हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है. वी हैव टू डेवलप अवर human relationships, and for that again tolerance is the brick. हमको अगर हमारे human relationships बढ़ानी है तो क्या है brick, क्या है जो सामान जो हमको लगता है, तो tolerance is the brick which is needed. Now हमारे family में, let us start with our family. So we have children in our family and many a times हमारे बच्चों के जो स्वभाव बनते हैं वो हम पर ही निर्भर होते हैं. And we are not tolerant towards them. हम लोगों को बड़े बड़े लोगों के साथ टैकल करना पड़ता है तो हम वहाँ टॉलरेंट होते हैं, लेकिन हम जब घर में आते हैं तो हमारे जो खुद के बच्चे हैं हम उन पर पूरा गुस्सा निकालते हैं. So first we have to learn to be tolerant with them, because again as I said that the target group is the children, because वो संस्कारक्षम है. हमारे तो स्वभाव बन गए हैं, फिर भी हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करके हम लोगों को खुद को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको अभी अच्छी तरह से डेवलप करना, अच्छी तरह से बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है. सो बी पेशेंट विद चिल्ड्रन, बी टॉलरेंट टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन्स. जो आपके घर में सीनियर सिटीजन्स है, सो बी टॉलरेंट टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजन्स which are there, because that is second childhood. You remember Shakespeare's poem, like the senior citizens, or the stage of senior citizenship is like the second childhood. ये दूसरा क्या है, childhood है. And if you have been like a very tolerant towards your children, तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो children आपके साथ भी tolerant रहेंगे. So if you were not tolerant with them when they were children, so naturally they will remember and they will have their sweet revenge when you are dependent on them. So remember that this cycle is going to take place. Now the children are dependent on you. So be tolerant towards them, be patient, be respectful to their needs, and be there for them. And they will be there for you. ये संस्कार उनमें हो जाएंगे. So जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो naturally they will be having patience. They will be looking after you. So a happy family ensures a healthy progeny. So we start from the happy family. Tolerance अगर आपको बढ़ाना है तो it should start from the family. जो हाँ हम बड़े होते हैं. So if a family is happy, it ensures healthy progeny. जो citizens है देश के वो naturally happy हो जाएंगे. So when can a family be happy? कब ये family happy हो सकती है? When each member in the family is tolerant towards the innate nature and attitude of other members. Family के सब members के स्वभाव अलग-अलग हो सकते हैं. So we have to develop a tolerant attitude towards all the members. किसी का स्वभाव गुस्सैल हो सकता है, कोई धीरे-धीरे काम करता है, कोई बहुत ही काम करता है, कोई चीजें जगह पे रखने का ही ये रहता है, कोई चीजें फैला के रखता है. सो 4-5 जो मेंबर्स होते हैं फैमिली में, उनका सब अलग अलग रहता है. कोई चीजें फैलाता है, कोई समेटता ही रहता है, कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है. सो इन चारों लोगों को भी साथ में रहना बहुत डिफिकल्ट है. और हमने कोरोना में देखा कि ये कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 7-8 घंटे हम बाहर रहते हैं, हमको एक दूसरे के इतने स्वभाव भी मुझे लगता है मालूम नहीं थे, पर हमारा लेवल ऑफ टॉलरेंस मुझे लगता है निदान फैमिली के बारे में बड़ा होगा, कम से कम फैमिली के बारे में आई होप बड़ा होगा, जब हमको साथ में 24 घंटे रहना पड़ा फैमिली के साथ. So when do we learn to be tolerant towards our boss, colleagues and juniors? So how can we learn to be tolerant towards our boss, colleagues and juniors? कब ये हो सकता है? When we always keep in mind that we've lived or will be living that role sooner or later. हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फैमिली
कि जब हम बाहर आते हैं तब किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो तब वहां हम टॉलरेंट कैसे रह सकते हैं, हमारे मन को हमको क्या बताना है. So when we always keep in mind that we have lived or will be living that role sooner or later. तो जब हम अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमको जूनियर से कैसे बात करनी है, बॉस से कैसे बात करनी है, कलीग से कैसे बात करनी है, तो जब हम याद रखते हैं कि हम भी कभी जूनियर्स थे, हम की भी कभी बॉस होने वाले हैं, हम लोगों को कलीग्स के साथ अच्छा बर्ताव करना है. सो व्हेन वी ऑलवेज कीप इन माइंड, तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, तो हम कभी भी स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों ने क्या गलतियां की है, हम लोगों के क्या प्रॉब्लम्स थे, हम कैसे टीचर्स के पास जाते थे, हम लोगों को बहुत बार कैसे लगता था कि ये टीचर्स ने ठीक तरह से बताया नहीं, ये नोटिस हमको मिली नहीं. तो ये सब हमको याद रखना चाहिए जब हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं. और स्टूडेंट्स ने ये याद रखना चाहिए कि हम भी बड़े होके कभी, बहुत सारे हमारे यहाँ मुझे लगता है स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये है, एम है कि वो टीचर्स बनना चाहते हैं, या और कोई भी चीज, कोई भी प्रोफेशन वो चूज करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे पोजीशन में आएंगे जिन वो कुछ लोग उनके अंडर होंगे, तो तब उनको कैसे हैंडल करना. सो ऑलवेज डोंट फॉरगेट द रोल्स व्हिच यू हैव डन इन द पास्ट and which you will be doing in the future. That will help you to keep your feet on ground. Yes, and that will help you to have a cool mind, क्योंकि empathy बहुत जरूरी है. इंग्लिश में दो शब्द है, sympathy and empathy. तो मुझे लगता है empathy, when you put yourselves in the shoes of others, that always gives you. on tolerance के लिए ये attitude, ये quality बहुत जरूरी है कि आप, बहुत बार स्टूडेंट्स लेट आते हैं तो टीचर्स बरसना शुरू कर देते कि why are you late and this. If a student is regular and if she comes late for once in a while, you have to talk with her patiently and you have to get to know why she was late. And first is you don't react. Yes, you don't react. First try to understand the other person with a very cool mind, and that will develop your level of tolerance. So stop reacting. Put yourself in the shoes of others, listen. You have to listen. Another quality which is required for tolerance along with patience, along with this, is listening. हम बहुत बार एक दूसरे को सुनते ही नहीं है. हम जब झगड़ा होता है तब एक बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है, दूसरा बात कर रहा है, तीसरा बात कर रहा है, वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा है. तो अगर वही बात वो शांति से बैठकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही होता है, कोई भी एक दूसरे की गलती नहीं होती है. तो अगर हम टॉलरेंट है, तो टॉलरेंस कहाँ काम आता है? टॉलरेंट पेशेंस. हम लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोगों को भड़ास अपनी निकालनी है, तो वो टॉलरेंस नहीं होता है. और हमको तभी अच्छा लगता है जब हम हमारी भड़ास निकालते हैं. तो धीरे धीरे हमको ये बात कम करनी है कि भड़ास निकालती की बजाय वी शुड टेक एन अपॉइंटमेंट विद दैट पर्सन, टॉक स्ट्रेट. इससे गॉसिप नहीं होगी, कोई भी किसी को गॉसिप करने का चांस नहीं मिलेगा. आप जिसके साथ प्रॉब्लम है डायरेक्टली उससे मिलो और उससे बात करो. तो टॉलरेंस यहाँ है कि आप डोंट ट्राई टू स्टार्ट अ क्वारल. यहाँ टॉलरेंस है. डोंट जंप टू द कंक्लूजन ऑफ स्टार्टिंग अ क्वारल. Go and talk with that person and solve the matter. आपको फ्रेंड्स चाहिए. बहुत बार लोग थे कि मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है. So you want to be gregarious? Again, tolerance is needed. Learn to tolerate moody, aggressive, self-trumpeting, selfish, maneuvering friends. कितने सारे क्लासिफिकेशंस है फ्रेंड्स के, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि आपके पास टॉलरेंस नहीं है. If you don't have tolerance, you won't be surrounded by friends. You have to tolerate. Again, जिससे हमने शुरुआत की, हर व्यक्ति अलग है, तो हर व्यक्ति के अलग अलग पहलू है, अलग अलग एटीट्यूड्स है, तो इन सबको हमको टॉलरेट करना है. Then only you will have a really good list of friends who would not just be Facebook friends or WhatsApp friends. They will be really there for you because you are there for them when they need them. First of all, be there for them. Be tolerant. अगर कोई friend आता है, if she is discussing the problem with you, you don't have time, yes, but then you have to tolerate. You have to find time to
talk with that person, and you have to be tolerant. Yes, you have to be tolerant. Maybe you feel that she is just thinking it will be better for her, it will be catharsis for her if she talks with you. So many a times in friendship or in any human relationships, you have to be tolerant. बहुत बार आपको अच्छा listener होना पड़ता है, tolerant होना पड़ता है, लोगों के problems सुनना पड़ता है, तब आप पॉपुलर हो सकते हैं। हमको लगता है कि ये 2 मिनट्स मैगी नूडल्स है कि हमको पॉपुलर होना है, पर ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बहुत सालों का परिश्रम होता है जब लोग आपको अच्छा बोलना शुरू करते हैं। आप खुद को तो अच्छा बोलते ही, आप प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं, आप अलग अलग जगह बोलते हैं, लग आपके पीठ के पीछे जब लोग आपको अच्छा बोलेंगे, दैट इज योर सक्सेस डे। To maintain friendship, we should learn to not only tolerate the success of others, but appreciate it wholeheartedly. ये बहुत जरूरी है। दूसरे सक्सेसफुल होते हैं तो वो टॉलरेट करना आना चाहिए। इट इज, यू हैव टू बिकम वेरी लार्ज हार्टेड, एंड दिस इज, ये बहुत यानी अवेयर है कि ये कल्टिवेट करना पड़ता है ये आदत, बिकॉज नेचुरली रिएक्शन इज, इसने ऐसे ही किया होगा, कुछ शॉर्टकट से किया होगा, ऐसे ही सक्सेस मिला होगा। There might be any, but success is success, and you have to appreciate the success, and you have to be magnanimous, so you have to be tolerant. अगर ये सहन शक्ति नहीं है आपके पास कि आप दूसरों का सक्सेस टॉलरेट कर सके, तो then you won't be able to, you cannot expect कि आप को लोग अच्छा बोलेंगे, आप को भी congratulate करेंगे. So first learn to congratulate others. First learn to understand that people will also be successful and you have to congratulate them. फिर रोज के हमारे जो होते हैं वो neighbors होते हैं. Again they can be nagging, quarrelsome, irritating, talkative, stingy. अलग अलग प्रकार के हमारे neighbors होते हैं. So again we have to develop a tolerant, क्योंकि हमारे दूर से रिश्तेदार आने से पहले भी कौन हमारे पास पहुंचता है, कौन हमारी मदद कर सकता है, तो those are strained like neighbors. So naturally we have to tolerate them, whatever kind of attitudes they have, natures they have. कोई भी उनका स्वभाव हो सकता है, चीजें मांगने वाले हो सकते हैं, कंप्लेन करने वाले हो सकते हैं, झगड़ने वाले हो सकते हैं, कंजूस हो सकते हैं, बहुत बातें करने वाले हो सकते हैं. So naturally you have to tolerate them all and maintain good relationships with them all. For a peaceful neighborhood, you need to cultivate tolerance. So for that you need, अगर जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वो फ्लैट हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, उनके साथ आपको अगर अच्छे रिलेशंस रखने हैं, so you have to maintain, you have to tolerate them, and you shouldn't quarrel with them. So that is needed. So society is the microcosm of a family. Societal tolerance आपको बढ़ाना है, तो society क्या है? Macrocosm है हमारे family का. It's a larger family. Every day we step out of our home on roads, stores, malls, offices, railway stations, and everywhere. We need smooth encounters with them if we want peace of mind and health. हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, फैमिली में भी टॉलरेंस चाहिए. बाहर हम जाते हैं, रास्ते पे कोई जोर से स्पीड से आता है, कोई आपके सामने धीरे धीरे चला रहा है. बहुत बार जेंट्स जो है वो अगर सामने कोई लेडीज चला रही है फोर व्हीलर, तो दे आर नॉट टॉलरेंट, सो दे गेट हाइपर इफ अ लेडी इज ट्रैवलिंग, आई मीन ड्राइविंग. So you need to be tolerant to all kinds of people you meet on the railway stations, while traveling, on buses, in offices, government offices. Especially when you go to government offices, you need to have a high level of tolerance. So अगर आपको काम करवाने हैं और आप अगर चिढ़ जाते हैं तो नहीं होता है. आपको अगर अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, और वो काम आपको अगर अच्छी तरह से करना है, तो वो जो कोई बाबू है काम वाला, तो उसे टॉलरेंट रहना बहुत जरूरी है. We need smooth encounters with them if we want peace of mind and health. आपके अगर काम आपको समय पे सही मायने में सही ढंग से करवाने हैं, तो we need tolerance. For this the ingredient needed is tolerance. इसके लिए क्या जरूरी है, हर जगह क्या जरूरी है, तो tolerance is needed. Social tolerance is an important part of an advanced society, and it supports economic development, diversity, humanity, and mental and emotional well-being.
अगर आपके पास सोशल टॉलरेंस है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट हो सकती है, ह्यूमैनिटी बढ़ सकती है, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग जो है सोसाइटी का वो बढ़ सकता है. Now, we'll come to national tolerance. We started from self, where we have to control our anger. Then we discussed about family, how tolerance is needed there, then at the workplaces, and then in the society as general. And let us now come to national tolerance. See, it all starts with me. How am I tolerant or not? So for national tolerance, everyone is treated equally and given equal opportunity. So अगर हम tolerant है तो naturally हम हमारे rights तो देखेंगे ही, पर दूसरों के rights भी respect करेंगे. So everyone will get an equal chance. Everyone is able to effectively utilize their talents and resources and improve their living standards. तो सबको अजन जो potential talents हैं सबके पास, वो सब देश के लिए यूटिलाइज होंगे, सब देश के जीडीपी बढ़ाने के लिए यूटिलाइज होंगे. This results in a bigger middle class and reduction in poverty. The greater spending power contributes to greater growth in the economy and a bigger consumer base. See, tolerating different kinds of people, what is happening? They are getting a chance to progress. Now, when they get a chance to progress, a middle class evolves. Now, this middle class has greater spending power, and therefore your economy will also enhance. It will also grow. आपकी इकोनॉमी देश की बढ़ सकती है अगर आप टॉलरेंट है. तो अगर आप टॉलरेंट है तो क्या होगा? सिविल वॉर नहीं होगा, आपस में फाइटिंग नहीं होगा, इसमें स्ट्राइक्स नहीं होंगे, इन सब में आपका समय नहीं जाएगा. And people of the country will get equal chance to grow, and they will be living peacefully with each other. And because they are getting equal chance to grow, they are happy, they are not fighting. So their production will also increase and the economy will also increase. In countries where certain groups are discriminated against, not only are they able to contribute less to the economy, but also this leads to the built-up of ghettos and vulnerable communities. जिस कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम देखते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे रेफ्यूजीज आते हैं, क्योंकि उनके देश में डिस्क्रिमिनेशन है, उनके देश में दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, एंड देयरफॉर दे आर नॉट हैप्पी देयर, एंड देयरफॉर दे come to or go to move to other countries. And if they move to other countries, where they have to live in ghettos. There are impermanent houses, there are huts, there are some refugee camps made. So you will see that this kind of society will never progress, which has discrimination, which does discrimination. Nations that practice discrimination are at a disadvantage and the risk of losing enterprising individuals from groups. So अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो इनफाइटिंग होगा, सिविल वॉर होगा, और अच्छे नए लोग, यंग लोग मर भी सकते हैं. Yes, so we are seeing in the Kashmir problems, in the Naxalite affected areas, we are seeing that lots of young talented people die because there is intolerance, because they are not ready to talk and solve the matters. So it is very, very necessary that instead of fighting, instead of creating revolutions, you should sit at the table and discuss and try to find solutions to your problems. Intolerance breeds hatred, hatred leads to distrust, distrust causes disunity. Intolerance अगर है, हमारे ही देश में बहुत सारे religions है, बहुत सारे caste है, class है, then there are different kinds of languages, then there are different kinds of cultures. So if we are not tolerant towards each other, what will happen? We will go on fighting. जैसे हमने देखा है, क्योंकि हम united नहीं थे जब मुगल आए, जब अंग्रेज लोग आए. So we were not united, we were fighting. Everyone had their own small kingdom and they were fighting. They were thinking that they are the world, and therefore they did not give a united fight against the British, neither the Mughals. Therefore, we were ruled for so many years. And again, if we are doing the same thing, if we are not learning from history to be tolerant towards all the citizens of India, and if we are not united, again, it may happen. Now, there will not be a direct war, but there will be wars through other things.
that they are capturing our markets, they are doing other things. So we need to be united as citizens of India. For that, we should respect the religions, different races, different breeds which are there in our country. So first of all, we should be proud that we are Indians. So if we are really tolerant, we would only say that I'm an Indian, nothing else. I think that is the need of the hour, that your identity should only be that I am an Indian, and this will make us loyal to our country, and we will be willing to make sacrifices for our country. And then we come to our global tolerance, that international tolerance. Like if we start from an individual, as I said, to family, organization, society, then national tolerance, we come to international tolerance, where we respect the sovereignty of our countries. We respect that they are different nations, and like which we see what has happened in Ukraine and Russia, and what happens in different countries. They're constantly fighting for some land. We see that China is approaching towards us. Pakistan has attacked us so many times. These are the countries who do not want peace. The leaders there, the political leaders there do not want peace. उनके selfish needs के लिए, उनके ego के लिए, उनकी ambition के लिए, they are putting the ignorant people, the innocent people at stake of their own country. So I think they don't love their country that much as they should. Otherwise, they wouldn't have kept their ambition at the forefront. So many people have died now in the Ukraine war. And what is the result? एक दिन वो war खत्म हो जाएगा. लेकिन what is the result? दोनों तरफ से इतने सारे लोग मर गए, इतना सारा loss हो गया property. And what is the end result? So we should respect the sovereignty of countries. We should respect borders, and we should learn to resolve disputes through dialogue. And then how to develop tolerance. We have been talking over the lecture, but let me give you the 4 ways of trying to develop tolerance. Take ownership of your feelings. First, वो जो कुछ भी feelings आपके मन में develop होते हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो. You talk of that. You don't try to be dependent on others for all your feelings. Whatever happens, don't react. Try to solve the matters amicably. So do not let the behavior of others destroy our inner peace. ये बोलना बहुत ही आसान है, करना बहुत ही कठिन है, because जिस stress में हम रहते हैं, बहुत सारे deadlines रहते हैं, we are living a very fast life, so it becomes very difficult. But then every day is a learning experience for us, and we need to grow from whatever we were yesterday to whatever we are today and what we are going to be tomorrow. So that is why this lecture is there. That is why these efforts are done. And this lecture is again a learning experience for me too, because it has given me a chance to think about all these things. So we should not allow the behavior of others to destroy our inner peace. दिन भर में कितने सारे लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन वो हमसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर भी हमको शांत रहना है. वी हैव टू टैकल देम. एंड ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में जाकर भी हम लोग शांति से ये कर सकते हैं. देयर इज ऑलवेज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉरी, थैंक यू एंड दिस टू पुट योर रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक. सो इवन दो ये लर्निंग प्रोसेस में एकदम से आप तो संत महात्मा तो नहीं बनेंगे, और मुझे लगता है ये बनने की भी जरूरत नहीं तो हमारा जो लाइफ है it will not be that colorful. अब हम लोग सब सेंट्स बन जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, कोई भी कैसे भी हमसे व्यवहार करो, हम लोग सहन करते जाएंगे. तो ऐसा नहीं होगा, हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन कम से कम अगर आपकी गलती है तो you should realize, and then you should be able to go ahead and make amends with that person. So you have to develop tolerance. धीरे धीरे ये आएगा, एकदम से नहीं आएगा. So therefore the students, again and again I'm saying, the students are at very raw age. They can be molded, and therefore from this day one they should remember to develop this very, very important attitude of tolerance. Now you have to develop curiosity also. इससे आप tolerant बन सकते हैं. अगर आप बहुत अच्छे किताबें पढ़ते हो, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हो, ग्लोबल टॉलरेंस चाहिए ना हमको. तो अलग अलग कल्चर्स जो है, कनाडा का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, छोटी कंट्री हो सकती है, वहां की अगर किताबें आप पढ़ते हो, उस पर अगर यूट्यूब में अवेलेबल है,
तो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रेसेस है, उनके बारे में अगर आप क्यूरियोसिटी रखते हो, सो इफ योर नेचर इज क्यूरियस, तो आप अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी लोगे। एंड देन बहुत बार बस से चलते चलते आपको कोई मिल जाता है, कोई आदमी है जो बहुत, या फिर ट्रेन में जाते जाते कोई मिजोरम से है, आपको कोई नहीं मालूम वहां के एरिया के बारे में, बट देन ओवर द जर्नी यू टॉक विद दैट पर्सन, और फिर आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए हो जाता है। सो ऑलवेज बी इंक्विजिटिव ड्यूरिंग अ जर्नी और दिस, रीड बुक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, ट्राई टू टॉक विद देम, break the ice, don't have this ego barrier, break the ice with people, बोलना शुरू करो, जानकारी हासिल करना शुरू कर दो, अच्छी अच्छी किताबें अलग अलग कल्चर्स पे, लैंग्वेजेस में, अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको आती है तो नेचुरली आप टॉलरेंट बन जाते हो, क्योंकि बहुत सारा कल्चर्स, बहुत सारे चीजों के बारे में आप जानकारी रखते हैं। सो यू डेवलप क्यूरियोसिटी, इससे यानी ऑटोमेटिकली आप टॉलरेंट हो जाते हैं, बिकॉज यू लर्न टू रिस्पेक्ट। कहीं एक जगह में आप जाते हो, जैसे आप इंडिया के, तो नेचुरली वहां के लोगों को आप देख के आ चुके हैं, सो यू हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर। सो व्हेन यू रीड अबाउट डिफरेंट पीपल्स, यू रीड अबाउट डिफरेंट रेसेस, you naturally start developing soft corners for those people, and this is very very necessary to develop an attitude of tolerance and change your perspective. Again, this is important, नजरिया, perspective, ये तो always important है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको कहा कि पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट पर्सन रिएक्टेड, या फिर कोई रिलीजन है या फिर कोई कास्ट है, वो क्यों ऐसे बिहेव करती है, कोई क्लास है, कोई व्यक्ति है जो उस क्लास से बिलोंग करता है, व्हाई दैट पर्सन इज बिहेविंग दैट वे, व्हाई शी इज एंग्री विथ यू, why her relationship with you is not healthy. Try to understand that perspective and try to solve the problems so that you can develop one more friend in your list of friends, and practice respect. This is very important. Treat everyone with kindness and respect, even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are. Yes. So practice respect. So once you understand their culture, once you understand why they dress like that, why they speak like that, why they eat like that, so you will develop respect. So you should develop respect for each other, for different races, different cultures, for different languages, for different ways of thinking. All these come under that. So you have to develop respect for each one of us. And see, that again thing is that my rights are important. I respect them. So respect the rights of others. I want independent thinking. I want that I should be independent. Then I should understand that people would also like to be independent. If I'm trying to make some others, I'm trying to dictate others, then that is bad. Then these are some quotes. I've come to the fag end of my presentation. These are some quotes by very great personalities. Helen Keller, all of us knows, and she was blind, and what she has said, because we are all people related to education, this quote is very important. The highest result of education is tolerance. So हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो व्यक्ति एजुकेटेड है वो टॉलरेंट है ही, that it is not necessary, but then programs like this, cultivating this attitude amongst children through various sensitization programs, can help them to become tolerant. So we have to remind them again and again through such kinds of programs that education should not make you egoistic, that I've achieved so much, I've got so many degrees, but it should make you tolerant. क्योंकि education से आपको information मिलती है, information से actually आप tolerant होना चाहिए. Laws alone cannot secure freedom of expression. In order that every man present his views without penalty, there must be spirit of tolerance in the entire population. That is important. आप कितने भी laws बनाएंगे, लेकिन nobody would respect that unless and until you work at the individual level, you work at the family level, you work at the school and college level. This idea of tolerance will not be cultivated.
कितने भी लॉज तो बहुत सारे हैं, ट्रैफिक लॉज भी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे कि जहां वो ट्रैफिक लॉज फॉलो नहीं किए जाते. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉज अलोन कैन नॉट डू दिस. व्हाई? बिकॉज लॉज से कुछ नहीं होता. कौन कोर्ट में जाएगा, कौन कोर्ट कचहरी करेगा? वी नीड टू बी टॉलरेंट, वी नीड टू चेंज अवर बिहेवियर, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. Tolerance is a basic pillar of democracy and the bulwark against totalitarian patterns of action and regimes. So we all would like to live in a democracy. हमको डेमोक्रेसी में रहना है जहां हम पीएम को भी कुछ भी बोल सकते हैं. यस, हम लोग कॉलम्स लिख सकते हैं कि इनका ऐसा गलत है, इन्होंने ऐसे गलत कहा. सो वी लिव इन अ कंट्री, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी कैन criticize even the greatest personality in the political field, in leaders, and we can criticize them. And that is identified because even a PM can commit mistakes, and even a layman can write in the newspaper how the mistakes has been committed by the PM, by the CM, or any other towering personality in the political or the social field. So tolerance is the basic pillar. Democracy अगर हमको चाहिए, democracy में हमको रहना है, तो we need to develop tolerance in each of us and the bulwark against totalitarian patterns. अगर हमको ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि एक कोई बड़ा हो जाएगा, एक कोई डिसीजन लेगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. एक कोई पावरफुल हो जाएगा तो उसके मन से ही सब कुछ चलेगा. तो हमको अगर ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, तो हमको इट इज टाइम वी राइज and we become tolerant and we tolerate the actions of others, we tolerate the good decisions taken by others, we tolerate the different natures which are present in others. The responsibility of tolerance lies with those who have the wider vision. और ये बहुत जरूरी है कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि मैं ही क्यों टॉलरेंट रहूं, why am I? So this is the answer which writer George Eliot says कि responsibility किनके पास है, कि जो वो आगे का देख सकते हैं, who have a wider vision. जो सिर्फ नैरो देख सकते हैं कि मेरी कास्ट, मेरी क्लास, मेरी रिलीजन, मेरी लैंग्वेज, those are people who have narrow vision. They are not thinking globally. Yes, the people who think globally never get constrained, never get caged in narrow divisions. So George Eliot says that if you want to increase the tolerance, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग वाइडर विजन रखते हैं. सो दे हैव टू बिकम लीडर्स. द पीपल विद द वाइडर विजन हैव टू बिकम लीडर्स एंड दे हैव टू एजुकेट द पीपल विद नैरो विजन. And you will see that political people are, they have to वो उनको अपना काम करवाना है. So naturally they are dividing us into narrow divisions, but we have to be alert, we have to be aware. So if we develop this weapon of tolerance, no political party can take us for granted. So we have to develop this attitude of tolerance to our immediate neighbor, to our family, to our friends, and to the people residing in India and abroad. So cultural differences should not separate us from each other, but rather cultural diversity brings a collective strength that can benefit all of humanity. So हम लोग सब अलग है. जैसे मैंने कहा कि जो भाई बहन है वो तो सिमिलर नहीं है, तो बाहर के लोग तो अलग अलग रहने ही वाले. So there is bound to be differences. And let us first tell ourselves that differences तो होने ही वाले हैं. तो अगर differences है तो differences of opinion होने वाले हैं, but we should learn to respect these differences. और अगर differences है नहीं है तो हम robots रहेंगे. We will be some machines who are working. और वो robots कैसे बात करते हैं, वो machines कैसे रहते हैं, वैसे हम रहेंगे. So we are humans. Each one of us is different. Each one of us is an individual given by God some potential. And therefore we have to respect these differences. अगर हम ये respect करना चाहते हैं और जानते हैं, समझते हैं, वो हम करते हैं, तो फिर हर एक का potential है, उसको chance मिलेगा, उसको platform मिलेगा. So first we have to identify these cultural differences, these individual differences, and we should not separate us from each other, but rather cultural diversity brings a collective strength that can benefit all. So our attitude should be कि हर एक अलग है, लेकिन ये अलग अलग है तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कर सकते हैं. हमारे कॉलेजेस में हम देखते हैं कि कुछ ऑनलाइन के काम अच्छे से कर सकते हैं, कोई कंपेयरिंग कर सकता है, और
कोई जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो लीडर है, वो जानते हैं कौन काम कौन अच्छा कर रहा है. सो अगर वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जो लीडर है, उसको सबकी तरफ टॉलरेंट रहना पड़ता है. ही हैज टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल बिकॉज ही नोस कि ये ऑफिस के लोग हैं, ये काम अच्छा करते हैं. ये जो स्टाफ मेंबर है, ये भले ही कंपेयरिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये बिहाइंड द स्टेज काम अच्छा कर सकते हैं. कोई है जो अच्छा बोल सकता है, कोई है जो अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, फाइलिंग कर सकता है. So even in an organization, there are different people who are having different abilities. So we have to learn to tolerate them, and we have to learn to coexist with them. And when we learn this, to respect these differences, and I think we will all become tolerant, and this would be a new beginning for all of us. And again, I would like to thank the organizers. On this note, I would like to end my presentation. And these are all the thank yous in different languages to show that differences are important. And again, I would like to thank the organizers for inviting me over. Thank you, Chetna Madam, for inviting me and giving me a chance to interact with the staff members and the students of different colleges. And again, I would like to congratulate the organizing institutions. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Sucheta. Really, you have thrown practical light on tolerance, and you have really highlighted it very nicely and in a very simple language that definitely not only the students, but every virtual participant will be benefited and will learn something from your guest lecture. We are thankful to you. Now I invite Dr. Babita Thul to propose vote of thanks. Over to you, Thul Madam. अरे यार, Thul Madam, mic. I am sorry. Good morning, everybody. Women Study and Research Center, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, University in Jabalpur, Madhya Pradesh, तथा BL Amlani College of Commerce and Economics, MR नथवानी कॉलेज ऑफ आर्ट, विले पार्ले, वेस्ट मुंबई तथा दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका नागपुर, इन तीनों महाविद्यालय के संयुक्त विद्यमान से आज इंटरनेशनल टॉलरेंस डे का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में प्रमुख रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर सुचिता मात्रे, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर इन इंग्लिश, श्रीमती बिंजानी महिला महाविद्यालय महाल नागपुर. इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से आज के विषय पर मार्गदर्शन किया है, क्योंकि टॉलरेंस यह दिन क्यों मनाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है और समाज में सहनशीलता कैसे बढ़ानी चाहिए, हैप्पी फैमिली कैसी होनी चाहिए, जिससे समाज में, देश में और विश्व में शांतता निर्माण हो. इस विषय में मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है. तो मैं वुमेन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा BL अमलानी कॉलेज कॉमर्स इकोनॉमिक्स मुंबई, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका, इन तीनों महाविद्यालय की ओर से मैडम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. इसी तरह से डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वरी राणा मैडम, वुमेन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी इन जबलपुर, मध्य प्रदेश, मैडम का भी मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. इसी तरह से प्रिंसिपल डॉक्टर जितेंद्र अहेरकर सर, BL अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. प्रिंसिपल डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार मैडम, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका नागपुर, मैडम का हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है और मैडम की वजह से हर कार्यक्रम में हम सहभाग लेते हैं. तो मैडम जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और आज के कार्यक्रम में संचालन का जो कार्य किया है डॉक्टर चेतना पाठक मैडम,
इंग्लिश डिपार्टमेंट दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह से रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुचिता मराठे मैडम का जो परिचय दिया है, प्राध्यापिका दिव्या पालेकर मैडम का भी धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में तीनों महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग जो उपस्थित हुए थे, इन तीनों महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में तीनों महाविद्यालय के जो छात्राएं उपस्थित थे और जिससे आज का प्रोग्राम सफल हुआ है, इन सभी का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद मैडम। Thank you, madam. With the consent of the chair, I would like to announce that the program is over here. And Suchita madam, I will email you the required documents and the reports that we will be preparing soon. Any Thank you, questions, thank you. children? Suchita, your presentation was excellent. No words to express. Very short time. You have really prepared well. And I would also thank Shraddha madam. Spontaneously, she addressed the virtual audience. I'm really thankful. A very great task has been done by Amlani College, Durgavati College, and our dear principal madam. She's always active, energetic, and the most enthusiastic principal in the principal forum. So I'm very, very much thankful for all of you for giving us time in a very short period. So here, to meet and to depart is the hope of life. Hope we will meet offline also. Thanks to all. The program is over. Thank Good you. day. Thank you so much, all of you. It was nice interacting here. Thank you. Sanchita ma'am, thank you so much. We Yes. hope that we'll meet soon in Mumbai or Nagpur. This was the first time we did Tolerance Day. And Yes. I was hoping ki whether even teachers speak about these issues, but you are up to the mark and your presentation was excellent. And many things Thank we you. learned Thank you today so from much. you. This Thank you. presentation will be there on YouTube channel also. Will be circulating to other people. So thank you so Thank you. Thank you. And thank you for giving me an opportunity to think about this theme. Thank you. Thank you. Thank you. Amlani sir, Ahirkar sir. Yeah, yeah.